the world, there is not one India studies program anywhere in the world. कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो 3 साल का इंडिया स्टडीज के ऊपर है. तो ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा 30 साल से हम बना रहे हैं कि इंडिया स्टडीज कैसे. Now, therefore, the human being is becoming weaker. उनका mind is not so tandrust. The body is far more important. So that jugalbandi between the body and the mind and the heart is getting broken. And when that gets broken, your soul becomes weak. When your soul becomes weak, the country will never grow. So those relationships are all getting affected. And for 20 odd years, we've been thinking how to build that energy. आप सोचो, जब पहली बार railways आए थे, domestic tourism started. Shivangam आओ, Allahabad आओ, Raveshwaram, Palni, Tiruvallarmalai. So these were the start of tourism. उससे पहले ऐसे होते थे. They didn't even say आओ. They said this is the tourist map. ऐसा है या जगह है आपकी प्रार्थना के लिए. Then there was the concept of the Orient. क्योंकि we were under British Empire. So they put Japan हो या China हो या India हो या Vietnam हो, एक ही image में आप देख सकते हो. India, Japan, China, Vietnam, various others. So symbolism started changing. Then we started getting confidence in ourselves after independence. We would go to the exact monument. So in this case, Chhatta Manzil. और ये posters कैसे design किया गया. So you can see the photos, how it links to the poster, and then how slowly we became the secular nature of India. कैसे बनता गया कि ताज, कुतुब, बुलंद, सांची, श्रवणबेगोला, जोधपुर. तो our concept of India, हम अपने आप को कैसे देख रहे थे through the eyes of the government to show the world. And then the greatest brand came along, Air India, और Air India ने दुनिया को take Indians to the world. So then that changes, and then my journey has been thousands. I can only show one item here in the exhibition. I've got thousands to build the whole base, but one sample to give an idea of the monuments, all the crafts. एक monument के इर्द गिर्द कितने चीजें बनते हैं. Bank, gymnasium, the craft policy, the labor policy, the employment policy, community policy, religious ideas, सब उसके इर्द गिर्द बनता था. वो सब टूट चुका. So the monument is no longer part of the whole development. Now temples are getting more energy, mosques are getting less energy. So all these changes are happening slowly over time. And then we come to our greatest energy of culture and cinema. Or cinema. This was the first photograph of Watson's Hotel, जब पहली film ever was shown in India. जब Lumiere brothers आए थे, ये बिल्कुल Regal के सामने है. तो Regal cinema यहाँ, आप बॉम्बे गए हो? हाँ. तो Regal cinema यहाँ है. Watson's बिल्कुल last. This was the first. ये iron से बना हुआ था उस ज़माने में. तो Himanshu Rai, Bombay Talkies, then Independence comes. Great movies. We got thousands of. Ashok Kumar and this is Janam Bhoomi. You can see there's no chemistry between those two, but वो भाग गई थी नजब के साथ. But that's another story. And then you've got Naya Dor, you've got Avara. Different. This was the balance between rural India and modern India. This was the greed of urban India and अंदर की जो आत्मा की destructions are. This was the reconstruction of the epics. So ये 50 score, then you choose one classic. हमने Pakiza चुनी and different art forms of Pakiza. ये आप देखिए, this is the original Golden Jubilee trophy of Pakiza. So at the end of it, then you come to the actual artworks, जिनसे posters or publicity material बने. This was the original standee in Alfred Talkies, 1960s में. ये गंगा जमुना का ओरिजिनल, जब गंगा जमुना में तादियों में रिलीज हुआ था. So like this we can just keep on going on. It's a huge framework, and this is a small facet of trying to give you, but you can get a sense of the energy that through the visual what can be created. And as a result, बिल्कुल ये राम तेरी गंगा. So the concept here was for the masses entertainment,
The aesthetics was of a Jubilee trophy. ये 100 वीक चला था. उससे भी ज़्यादा था, but what I'm trying to show here is there were two kinds of cinema in India. One was the film festival cinema, Satyajit Ray, Shyam Benegal, Adoor Gopalakrishnan, Mani Kaul, Kumar Shani. And then there was the Manmohan Desai and Prakash Mehra and Amitabh Bachchan blockbusters, which made, so ये दोनों की जुगलबंदी भी अलग aesthetics है, but it together makes India. India's got all these worlds sitting inside her. Yeah, एक बंदा था, आसिफ, ABC नहीं आती थी उसको सिनेमा के बारे में, किसी की जान पहचान नहीं थी. In 1945, he started making Mughal-e-Azam. So he took the cover of Film India. Film India was the most important film magazine उस वक्त में. उसने 2 ही फिल्में बनाई सिर्फ. 2 ही बनाई थी, 3 एक मर चुकी थी. In 1945, Chandra Mohan was the hero and Nargis was the heroine. He took K. Asif ने बनाई और 10 covers. He took 10 covers of Film India all the way till 1960. And then finally, the maqsad is that हर बंदे में एक मुग़ल-ए-आज़म बैठा हुआ है, लेकिन उसको निकालने के लिए, उसको बनाने के लिए जिगर और जुनून की जो ज़रूरत है. It's not just money. So Mughal-e-Azam is an older version of a father-son relationship. Well, Yeah. a younger version, because Yeah. it's Jahangir and Akbar's relationship was, older. But I know K. Asif story and Naushad story. Well, both of them, both 50,000 उसने दिया था, बोलो. उसने बोला कि मैंने एक कहानी सुनी थी कि वो बोले कि मम्मी को गाना चाहिए जिसमें जैसे जो तानसेन की तरह गाते हो. वो गुलाम अली साहब के पास पहुंचे, लखनऊ रहते थे, नौशाद बोले मिला दूँ. तो वो गई, बोले कि आपको फिल्म में गाना है. बोला फिल्म में गाता ही नहीं. तो फिल्में बनती थी मुश्किल से 15-20 हज़ार में, 25 हज़ार में. तो के आसिफ ने सिगार पिया, बोला नहीं गाना तो आप ही गाएंगे. नौशाद बोला पागल आदमी तो नहीं है, ये बड़े गुलाम अली खान है. हाँ बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान साहब. तो फिर बोला कि यार तुम ठीक करोगे, मैं ठीक करूँगा. बोला नहीं आप ठीक कर दो. उसने के आसिफ को अंदर बुलाया रूम के अंदर. बोला गाना तो आप ही गाएंगे. बोला गाना मैं गा दूंगा. बोला 50,000 रुपये लूँगा. फिल्में बनती थी 25,000 में, 30,000 में. तो उसने निकाल के 5,000 जेब से और उसके हाथ पे रखा. बोला ये आप इसको एडवांस समझो, गाना आप ही गाएंगे. मतलब Absolutely. He asked for 2 लाख, 50,000 उसने नौशाद को दिया था. 2 कहानियाँ, अलग कहानियाँ है. एक नौशाद किया जो म्यूजिक बनाया, और एक बड़े गुलाम अली किया जो आप बता रहे थे, जो गाना गाया. जो मधुबाला और जो बिल्कुल दिलीप जी मिलते हैं, बिल्कुल. और उसके लिए उसने 2 लाख मांगा. And these are some of the original artworks on which Mughal-e-Azam built its publicity. Anyway, very nice meeting you, Baba. Same here, sir. You live in Delhi or Mumbai? Delhi. ये एग्जिबिशन ये इंडिया स्टडीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया स्टडीज़ को समझाने के लिए कि हमारे देश में जब तक इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, एथिकल जुड़ा सिस्टम ना बनाया जाए, हम आगे नहीं बढ़ सकते देश के साथ. It's not just about
power of the politics and the power of the religion. The greatest power is the cultural, intellectual power. और उसको समझने के लिए हर बंदे को एक्सेस होना चाहिए, हर बंदे के साथ कि मुझे किसी की भीख नहीं मांगनी है, मैंने किसी को जानना नहीं है, मैंने किसी से पूछना नहीं है, मुझे किसी को पैसा नहीं देना है, ये मेरा हक है। एजुकेशन अब हक होना चाहिए, बिजनेस नहीं। उसको बदलने के लिए हम विजुअल पावर ऑफ नॉलेज ला रहे हैं और उसके लिए इंडिया स्टडीज़ का जो फ्रेमवर्क बना जा रहा है, ये एक छोटा सा एग्जीबिशन है उसके ऊपर। देखिए, जो ये देखा मैंने, किसी भी देश को आगे जाना है ना, तो उसको अपने इतिहास की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर इतिहास की जानकारी नहीं है सही तरीके से, तो जो आप गूगल पे है ना लाइन ढूंढ सकते हैं, मगर आप गूगल पे है ना वो बुद्धि नहीं ढूंढ सकते। वो एक जो सही मायने में जो हमें बुजुर्ग हमें देते थे ना, वो चीज़ नहीं ढूंढ सकते। और किसी भी कंट्री ने जब ग्रो किया है ना, अगर उसने अपना पास छोड़ दिया है तो आगे फ्यूचर में नहीं जा पाया है। तो जो ये मैं एग्जीबिशन देखा, तो इसका मोस्टली उद्देश्य ये है कि भाई हम पीछे हमने ये किया है, फिर सर्टन टाइम हम चेंज होते रहे, अब हम ये कर रहे हैं। ये चाहे सिनेमा के थ्रू दिखाओ या आप नॉर्मली किसी टूरिज्म के थ्रू दिखाओ, मगर ये अच्छी बात है। इतिहास याद रखना चाहिए। और इतिहास तो जो भारतीय संस्कृति को जिसने पढ़ लिया, देख लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर उसको ना गीता, बाइबल, कुरान, सारी चीज़ें ज्ञान हो गया। जो देख के मुझे यही फील हुआ। Yeah, so it's very nice to watch the cinema that's been depicted through these paintings and portraits, and like Sir said, it is about educating the masses about the cultural history of India. It's great to see Mughal-e-Azam, Kranti, Amitabh Bachchan ji's film posters, Ashok Kumar ji's film posters, to see the history of India. So it's great to be here, and I'm very, very happy that we could come here due to Hamersha. Thank you. अच्छा, मुगल-ए-आज़म की मैंने के आसिफ साहब के बारे में पढ़ा मैंने। वो बहुत पैशनेट थे। उन्होंने लाइफ में सिर्फ 2 फिल्म बनाई। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि उनको बड़े गुलाम अली साहब से गाना, उसने देखा कि भैया कोई बैजू बावरा जैसा सिंगर चाहिए, तो नौशाद जी को बुलाया। नौशाद जी ने इसका संगीत दिया। बोला वो लखनऊ में मिलाने ले चलता हूँ। उनकी जेब में कुछ नहीं, बड़े गुलाम अली साहब खान को जाके बोल रहा है कि भैया मैं इतने पैसे लूँगा, ये सब करूँगा। तो मतलब कहने मतलब डील उसने की। जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी ना, तो उसके पास इवन क्रू को चाय कॉफ़ी पिलाने तक के पैसे नहीं थे। फिर इस फिल्म ने जो हिस्ट्री रची आप देख सकते हो। लाइफ में उसने 2 ही फिल्में बनाई हैं। ऐसे ही नौशाद वो म्यूज़िक बना रहे थे, तो उनके सिगार पीते थे, तो सिगार पढ़ के ये बिल्कुल जल गया था। मगर तो यानी कुछ भी चीज़ करोगे तो आपको पागल बनना पड़ता है, दीवाना बनना पड़ता है। बगैर पागल के, बगैर दीवानगी के आप कोई चीज़ पा ही नहीं सकते।